ABC Limited is a large transnational company having diversified business activities with a huge shareholder base. The company is continuously expanding and generating employment. The company in its expansion and diversification program decides to establish a new plant at Vikaspuri, an area which is underdeveloped. देखो नाम विकासपुरी है, area underdeveloped. ठीक है. The new plant is designed to use energy efficiency technology that will help the company to save production cost by 20%. The company's decision goes well with the government policy of attracting investment to develop such underdeveloped regions. The government has also announced tax holiday for 5 years for the companies that invest in underdeveloped areas. However, however के बाद problem शुरू. The new plant may bring chaos for the inhabitants of Vikaspuri region, which is otherwise tranquil. मतलब समझ रहे, शांति रहती है वहां पे, अभी वो खड़ा एकदम धड़म धड़म शुरू हो जाएगा आपका प्लांट से, आवाज, साउंड पोल्यूशन बेसिकली. The new plant may result in increased cost of living. Okay, aliens migrating to the region. Aliens means not jadoo. ठीक है, disturbing the social and economic order. The company, sensing the possible protest, tried to educate the people of Vikaspuri region and public in general that how its CSR policy would help overcome the likely difficulties of the resident of Vikaspuri region. In spite of the protest began, and some of the residents decided to approach the judiciary as their plea before the government did not yield any result. Identify the issues involved in the case. What can be suggested to satisfy the company's goal and to address the resident concern? समझ में आया? नहीं भी आया तो भी लिखो. What is your role in the case study? Who are you? Nobody. तो नहीं होता है. ऐसा तो नहीं दिखा है. दिखा है कहीं? ये ठीक है. But is it only company consulting with? Because see B question. What can be suggested to satisfy the company goal and to address the resident concern? To whom? ये भी नहीं लिखा होना. तो इस केस में हम क्या होते हैं? तो somebody is like एक केस थी आई थी शिवकाशी वाली, देखा है वो, फायर क्रैकर्स वाली. तो उसमें आपको कोई भी नहीं है, जस्ट सिटीजन. लाइक यू हैव नो स्पेसिफिक रोल, यू आर नॉट सम लेबर पर्सन, यू आर नॉट पुलिस पर्सन, यू आर नॉट एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन. नहीं, ऑफिशियल देखो जाकर फिर से पढ़ना, अभी नहीं, फिर से जाके पढ़ लो. तो बेसिकली क्या है, इफ देर इज नो रोल गिवन एज सच, योर रोल इज somebody who wishes good for all, well meaning citizen. ठीक है. तो दिस केस स्टडी इज लाइक, जैसे न्यूज में सुनते हैं ना हम, ऐसा ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे किया, विकासपुरी में ऐसा हुआ, पता है, तो फिर देन यू गिव कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था. ऐसा होता है? नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूज पहुंच गई कि मिजोरम और आसाम पुलिस में हो गया, और मिजोरम बोले नहीं आसाम को मार दे, आसाम बोले नहीं, तो ये तो गलत हो गया. फिर आप क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए था? तुरंत आएगा दिमाग में? नहीं आएगा. जो होना है होना, कोई दिक्कत है, मेरा तो कोई संबंध नहीं होता. तो इमीडिएटली यू स्टार्ट थिंकिंग बिकॉज यू वांट सॉल्यूशन. लाइक दैट हियर यू हैव टू थिंक. तो बोथ द पार्टीज यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ आइडेंटिफाई द इश्यूज इन्वॉल्वड इन द केस. क्या इश्यूज है? Issue, yes, okay. Apprehension because of perhaps lack of trust or lack of calculation, miscalculation about future things. Okay, then that is also okay. Development is also a issue there. Being underdeveloped is also a fact, but that's a fact
which in the form of issue. Okay, then okay, but issue क्या है इसमें? Okay, so possible halting of the or possible delay of the project will raise the cost. And another irony here is, you know what is irony here? What is the irony here? No, वो तो हो गया, ठीक है, but उसी context में एक irony है that it is underdeveloped and they are resisting the development. Like when the area is underdeveloped, generally what happens, people ask यहाँ पे कुछ government should support some company here so that job creation हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा. यहाँ पे उल्टा हो रहा है. And reason is they will lose the tranquil. उनके अपने concerns हैं कि वहाँ पे you know maybe traffic will increase, things will go like cost will increase. You know, maybe some external influence may come in. यहाँ का युद्ध बिगड़ जाएगा. You know, cultural conflict हो सकता है. Alien word इस्तेमाल इसलिए किया है. तो ये इनके concerns है, fears हैं. Okay. Yes. Yes, हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. तो अब बताओ, अभी कंपनी को आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी इस केस में आप, जैसे आपने बोला, यू आर समबडी हु इज टू whom कंपनी इज ट्राइंग टू कंसल्ट टू, व्हाट वुड यू डू? वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं, नो नो, प्रोटेस्ट का एक पॉइंट है ना, यू हैव टू allay their fears because otherwise unnecessary. Interestingly, this there is no complexity in the issue, there is no gravity in the issue from the people's side. Like normally what would have been, you know, they are taking our land, you know, they are not going to give us, they are not giving enough compensation. What happened in Singur? That Singur issue, how many of you know? West Bengal, Singur, Tata. No. तो ये नोट डाउन करना और लिखना, बिकॉज ये क्लासिक केस स्टडी है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है. एंड इट हैपेंड लाइक एनीथिंग. वेस्ट बंगाल, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, Mamata Banerjee and the team protested very heavily against Tata's, I guess, Indica plant. Indica car, you know, once upon a time बहुत famous. Nano plant, sorry, nano plant. Yes, not Indica. दिखने में दोनों सेम ही लगती हैं, but हाँ, nano plant, yes. And that would have been a big boost to West Bengal. Others, West Bengal में इतना job opportunity तो है नहीं. If you compare with Tamil Nadu, compared with Gujarat, Maharashtra, कर्नाटका, वहाँ पे कहाँ कुछ, जो कोलकाता में पुराने जमाने में जो, हाँ, अंग्रेजों के समय उसी पे चल रहा है अभी. हाँ, वो कम्युनिस्ट लीग से 25 साल ज्योति बसु रहे हैं. तो वो सिंगूर में वो अपोजिशन हुआ था बहुत ज्यादा. मतलब उन्होंने प्लांट शुरू किया था बनाना, उसके बाद प्रोटेस्ट ऑन टाटा का प्लांट. मतलब इट वाज अ बिग प्लांट. जस्ट इमेजिन नैनो प्रोडक्शन, इतना बड़ा, मतलब 1000 एकड़ में, शायद वो नंबर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ऐसा 800 एकड़ 500 एकड़ ऐसा कुछ प्लांट था. एंड प्रोटेस्ट हो गया पॉलिटिकल. तो ये दिस इज आई थिंक समवेयर 2005-6 समवेयर टाइप्स 7 मे बी. देन यहाँ से मोदी जी सीएम गुजरात के, वाइब्रेंट गुजरात, बोले कि आ जाओ, हम जितना चाहिए लैंड जमीन सब दे दें. तो अभी वो कौन सी जगह है मुझे नहीं पता अभी, सानंद ऐसे कुछ जगह है, वो प्लांट वहाँ पे बना. तो वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया. वेस्ट बंगाल अभी वही है. वो क्लासिक केस माना जाता है कि हाउ यू नो थ्रो अवे योर ओन अपॉर्चुनिटीज. एंड स्पेशली स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, जिनको जरूरत थी. तो मतलब, एंड टाटा था, ऐसे भी नहीं कि टाटा हैज अ वेरी गुड इमेज ऑफ बीइंग लोकल पीपल फ्रेंडली,
CSR एक्टिविटी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, और बिग पार्टी है तो पैसे की मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि कंपेंसेशन दिया नहीं कंपनी बंद हो गई, ये सब नहीं होने वाला था, बट नहीं हुआ। तो वो एक क्लासिक केस, मतलब कभी आप समवेयर मे बी GS3 में या ऐसे कभी वोट करना हो तो कर सकते हैं। नहीं वो छोटे छोटे आर्गुमेंट्स थे, वो हमें कंपेंसेशन नहीं मिल रहा, यहाँ पे पोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे अभी आर्गुमेंट डिटेल याद नहीं, लेकिन इट वाज एक्चुअली आर्गुमेंट पॉलिटिकली था, बस ये नहीं चाहिए हमें, और वॉट एवर रीजन नहीं चाहिए ऐसे। तो वो कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तो थी नहीं उसमें, बट टाटा गॉट पिस्ड ऑफ। दैट्स व्हाई टाटा थॉट दैट कुछ नहीं, वो आर्गुमेंट ऐसे थोड़े दिन चलेंगे, कंपेंसेशन देंगे तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सुने ही नहीं उन्होंने, तो बड़ा वाला प्रोटेस्ट शुरू हो गया। परहैप्स शी मोबिलाइज्ड पीपल टू फॉलो हर, because that was the time I think the West Bengal was shifting from left to her, so she cannot suddenly look like a capitalist. Maybe that was the reason she was like, no, I am also like them, only vote for me, like that. वो तो हैंगओवर तो अभी भी है, लेफ्ट हैंगओवर अभी भी लोगों के, बड़ी इंडस्ट्री एंड ऑल दिस स्टिल थिंक दैट नहीं चाहिए। एंड गुजरात का एग्जैक्टली उल्टा है, कोई भी इंडस्ट्री, नर्मदा डैम, तुरंत लोग, पीपल फुल सपोर्ट। इवन नाउ देयर हैव बीन, वो भी मैंने एग्जांपल इसमें आ सकता है जब भी आपको जरूरत पड़े, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो नर्मदा डैम में जो ट्राइबल्स भी है वहां पे एक वो अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं सिद्धि, तो उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं अभी। नहीं, गुजरात में ज्यादा है, कर्नाटक में तो नहीं, गुजरात में है। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया, आई नो। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, सो आई एम सेइंग their interviews, they are coming up and saying that it helped us a lot, this Narmada dam, because a lot of agriculture activity happened, production increased, jobs started creating, they started getting some of the other job, schools started coming up, they started getting admissions in the school free, and obviously electricity is 24/7 in since 2004-5 in Gujarat, तब से 24/7 है electricity वहाँ पे। तो वो एक example दे सकते हैं, because see we have to be now at least, you cannot say you cannot be anti-industry, you can be anti-crony capitalism, but anti-industry is a different word. Like we say na, industrious means somebody udyog, somebody has to want to do something, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। कैपिटलिज्म के, क्रोनी कैपिटलिज्म के, you can have a ethical stand, because without industry you are not going to have a better lifestyle. यही यहाँ पे भी आर्गुमेंट। Ultimately what would you do, what would you want to happen in Vikaspuri? विकास ना, तो दैट कंपनी आए। हाँ, ये हो सकता है कि एनी पॉसिबल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, कॉन्सिक्वेंसेस लाइक पोल्यूशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट नहीं होना, साउंड पोल्यूशन, उसको कम किया जा सकता है इन केस दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज उनके फियर वही तो है, और क्या फियर है। सडनली बाहर का इनटेक वगैरह, यू हैव टू इंश्योर देम दैट ओके जितना हो सके हम लोकल यूथ को लेंगे जॉब में, राइट। नहीं, शिफ्ट करने का तो बात ही नहीं है, शिफ्ट तो करना ही नहीं है, वो तो जुडिशरी जो ऑर्डर देगी तब तक टाइम है। वन मोर थिंग, वी सी व्हेन यू सेड यू टॉक टू पीपल, द बेस्ट वे इज टॉक टू होम। तो ओके, ऐसे केसेस में नेवर मेंशन द वर्ड लाइक MLA, MP, पॉलिटिकल लीडर, ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव, okay, local public representative, that word should be used if you are taking it in a positive tone. If it is to be taken in the sense of, because if the case study is using politicians and bureaucrats ऐसा, then you can use it, because वो पक्का negative use हो रहा होगा। But here we want, because you will be perhaps receiving the positive thing from the that local politician, local public representative basically. So don't use the word politician there. And really speaking, half of the work, half of the job will be done if you convince him or her, whoever is the person there, MLA, MP, जो भी सीन हो, half of the job will be done, because वो representative का मतलब भी वही है। You cannot meet all the 1 lakh population of the district, अभी विलेज है तो जो भी 60,000 population नहीं meet कर सकते, you have to meet the local person।
रिप्रेजेंटेटिव बने ही इसलिए हैं दैट वी कैनॉट टॉक टू ऑल 60,000, ओके टॉक टू आवर लीडर, जाओ, इसको हमने चुना ही इसलिए था, नॉट जस्ट फॉर लेजिस्लेशन फॉर दिस एक्टिविटीज ऑल्सो, रिप्रेजेंटेटिव है ना वो, ठीक है। यस दो पार्ट में लिख सकते हैं वैसे, हाँ तो वही तो, सी इट अनलेस सम स्पेसिफिक, बिकॉज एक्शन तो एक ही होगा वैसे, यस एक्शन तो एक ही लेंगे ना, द एक्शन शुड सेटिस्फाई बोथ, एक्शन कैनॉट बी आप मतलब यू नो विल लिसन टू यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल्सो, ये तो नहीं होगा, बट some action will be taken so that the company gets its thing going. Some action would be basically keeping in mind public. For example, you are वो transparency तो नहीं but assurance करने के लिए some activities if companies asked to do, suggested to do some activities there in the local, tree plantation activity, free education to the children or free some bridge courses activity, some perhaps entertainment activity for some time to gain the trust of the people. Because यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, दिस केस स्टडी वुड हैव बीन रियली बेटर, वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इन्वॉल्व ही नहीं किया उन्होंने, दैट पीपल आर वरीड अबाउट देयर ओन लैंड एंड थिंग्स लाइक दैट. अनदर थिंग इज रिसोर्सेज आर लेस, देयर मेन कंसर्न वुड बी लाइक अगर कंपनी आ गई तो हमारे यहाँ वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कम रहते, अभी सब इनको दे देंगे, ऐसा होता भी है, कंपनी आ गई तो फिर रेसिडेंट को इलेक्ट्रिसिटी आप दिन भर क्या क्यों चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, रात में दे देंगे हम, वो बोलेंगे पहले मिल नहीं रही थी अभी और प्रॉब्लम हो जाएगी. गवर्नमेंट ने तो वो पास कर दिया, सी लोकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल रहेगा, गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया, क्या करेगा गवर्नमेंट इसमें. यू मीन डीएम वगैरह, नहीं गवर्नमेंट मीन्स होम, जनरली गवर्नमेंट मीन्स टू पीपल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट, इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ होता है नहीं. कौन उदाहरण क्या, ब्यूरोक्रेट होगा या तो गवर्नमेंट पॉलिटिशियन होगा, इसके अलावा कोई स्टेट अथॉरिटी. तो यू मीन टू से डीएम और एसडीएम जो भी होगा, तो बट उस उनसे कुछ, क्योंकि ये देखो तो गवर्नमेंट का अप्रूवल भी मिल चुका है आपको, मींस आपका ईआई भी हुआ होगा पक्का, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, गवर्नमेंट इन लाइन विद गवर्नमेंट्स पॉलिसी. ये प्रॉब्लम इज दे हैव सम फियर्स, एप्रहेंशंस, डाउट्स, उसको आपको रिमूव करना. हो सकता है गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कैन हेल्प यू एज इन एडमिनिस्ट्रेशन, बट बेस्ट हेल्प वुड बी डन बाय पॉलिटिशियन, public representative, and some activities from the side. You can approach school also if in case the companies of that kind जो बच्चों के प्रोडक्ट बना रहे वाली, ऐसा तो कुछ इसमें लिखा नहीं ना. What is company making, तो ऐसे तो कुछ दिया नहीं है ना. यस यस social, that is called social cost benefit analysis. It's a very famous term, like EIA, this also term is famous, social cost benefit analysis. हमने ये पहले भी बात किया है, ये बहुत अच्छा कहीं मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस इट फिट्स इन व्हेनेवर पब्लिक इज इन्वॉल्व्ड. तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट मींस यही, प्रॉपर एनालिसिस करके उसका रिपोर्ट पब्लिश करो, ये भी अच्छा है. ठीक है.